Welcome to my YouTube channel. Today I will discuss a different concept called divisibility. ठीक है, मतलब divisibility theory or something like that. When we say an integer a is divisible by another integer b, which is obviously greater than 0. That means a is divisible by b, जिससे डिवाइड कर रहा हूं ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा. कब? व्हेन वी से एन इंटीजर a is said to be divisible if there exists an integer q such that a can be written as bq. An integer a is said to be divisible by an integer b which is greater than 0 if there exists an integer q such that a equal to bq. मतलब कोई भी नंबर ले लो 6, there exists integer 2 such that we can write 6 equal to 3 into 2. This is like q and this is like b. Therefore we can say 3 divides 6. That means 6 is divisible by 3. Similarly we can say, if we consider this is 2 as b and 3 as q, then you can say 6 is also divisible by 2. And this is the notation, 3 divides. From here you can say a is multiple of b. Also you can define in another way that a is said to be divisible by an integer b which is greater than 0 if a can be written as a multiple of integer multiple of b. ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो. तो इसमें 3 डिवाइड 6, 2 डिवाइड 6, so this is the notation. ठीक है, 6 divided by 3. This sign, this is notation, and here this is an operator which is called division. So this is the concept divisibility. Like 1 divides each and every number for all a belongs to integers. So this is first property. इसके साथ साथ कोई भी नंबर जो इंटीजर है एंड जो नॉट इक्वल टू 0 है वो a divides a, मतलब any integer not equal to 0 divides itself. मतलब कोई भी नंबर जो 0 नहीं है 2 divides 2, 3 divides 3. This is the property of divisibility. Similarly, if a is 0, then any integer is a divisor of 0. मतलब 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा. a for all a belongs to integers, set of integers, a divides 0. ठीक है, क्योंकि 0 can be written as a into 0, where 0 is an integer, that means you can write is q and this is as b of this definition. So any number will divide 0. Also one thing here, and this b is called divisor. ठीक है, this is called divisor, and I will discuss properties of this divisor one by one. Transitivity property क्या होता है? If मान लो a divides b and b divides c, तो क्या होगा? a b को डिवाइड कर रहा है या b c को डिवाइड कर रहा है, तो this will imply a divides c. जैसे कि मान लो 2 divides 4 and 4 divides so 8, तो ये जो 2 obviously divides 8. ठीक है, this is a, this is b, this is b, this is c, so a will divide c. ठीक है, this is called transitivity property. Similarly, third one is if a divides b and c divides d, then this will imply multiplication of this, मतलब ac will divide bd. Prove each and every property in the next video, but in this video I will discuss just the property. What is the property of divisor? So these are divisors: a divisors of b, c divisors of d. If a is divisor of b and c is divisor of d, then we can say a into c is the divisor of bd. Fourth property is a divides b and b divides a, then this a equal to
प्लस माइनस बी। ए बी कहाँ है? इंटीजर में। ठीक है, अगर ए बी यू कैन टेक फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन यू विल गेट ओनली पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ओनली पॉजिटिव 1 2 3 4 ऐसे होता है, लेकिन इंटीजर में नेगेटिव भी होता है, तो इसलिए इसमें नेगेटिव हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है, मान लो कि 2 डिवाइड्स 4 एंड इसमें 3 डिवाइड्स 3 कर सकते हो, तो इसमें 2 into 3 that is 6 will divide 4 into 3, मतलब 6 divides 12, obviously correct. So this is the example of the third property. And fourth property example, you can take this 2 divides 2 and also 2 divides minus 2. Minus 2 divides 2, क्योंकि 2 can be written as minus 2 into minus 1. Similarly, minus 2 can be written as 2 into minus 1. So 2 minus 2 को भी डिवाइड करेगा, minus 2 को डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसा होता है। और 5 फिफ्थ property is very very important. मान लो कि if A divides B and A divides C, then this will imply A divides bx plus cy for all xy belongs to z. क्या है? मान लो एक नंबर b को डिवाइड कर रहा है और दूसरा नंबर c को डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा b एंड c का, उसको भी a डिवाइड करेगा। जैसे कि मान लो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 6, तो इसमें a डिवाइड्स b, 2 डिवाइड्स 4, सिमिलरली 2 डिवाइड्स 6, तो अभी 2 विल डिवाइड 4x प्लस 6y, कोई भी xy, if you consider xy from set of integers, you put here, you will get an even number from right side of 0 or also as well as left side of 0. मान लो इसमें x इक्वल टू 1, y इक्वल टू भी 1, तो क्या होगा? 4 6 10 होगा, तो 2 will divide 10. Similarly, if you take 1 minus 1 plus, so this will be minus 4 plus 6, that is 2, so 2 obviously divides 2. If you take this one plus this one minus, then you will get 4 minus 6, that is minus 2. Obviously 2 divides minus 2, क्योंकि minus 2 can be written as a multiple of 2. Minus 2 is equal to minus 2 into minus 1. So there exists q equal to minus 1 in set of integers. ठीक है, so ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नंबर इंटीजर a को डिवाइड कर रहा है एंड c को डिवाइड कर रहा है, it will imply a divides bx plus cy for all x and y from set of integers. And the last property is c equal to ax plus by and d divides a, but d does not divide c. This is does not divide c. मतलब एक नंबर है c जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंटीजर्स a b, और एक d है जो a को डिवाइड कर रहा है, c को नहीं कर रहा है। मतलब ये जो d डिवाइजर a को डिवाइड कर रहा है, b को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? c को भी डिवाइड नहीं करेगा। अगर एक लीनियर कॉम्बिनेशन है और एक नंबर एक पोर्शन को डिवाइड कर रहा है, दूसरा पोर्शन को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो वो सम को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो इसीलिए व्हेनेवर c is equal to this and d divides a but d does not divide c, then we can say d does not divide c. sorry does not divide क्या है? a को डिवाइड कर रहा है, c को डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब b को डिवाइड नहीं किया। देखो c does not divide c, that is ax plus by, and also given d divides a, मतलब d divides this portion, so obviously a होगा कि d जो है वो b को डिवाइड नहीं किया। This will imply d must be not a divisor of b. ठीक है, so these are the main properties of divisor. If you like it, please subscribe my channel and share with your friends. It will be very beneficial to understand the concept of mathematics from beginning, and it will help to grow in advanced level. Till the next video, keep learning and keep watching my videos. Thank you very much.